أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear fellows, students, colleagues, and those who are appearing in the examinations and postgraduate examination in Pakistan or in the European territory or in an American territory. We are actually following the infectious diseases or infectiology, and we are taking actually bacteria. We are talking about the bacteria and the gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. 1 gram negative bacteria are Chalmydias. They are the group of the organisms which are Coccobacillus, Bacillus, weak gram-positive. Therefore, they are gram-negative. They do not stain properly with gram stain, and they are the intracellular obligates, and thirdly, they are parasites. And fourth point is, among them, they are often underdiagnosed, and in some countries, it is overdiagnosed. Now, this is session number 3. I have already taken 2 sessions on Chalmydia trachomatis and on Chalmydia pneumoniae. And this was the 3rd session, and it is Chalmydia psittacosis. Now, I have seen one case of this. I am Professor Syed Ali Haider. I am the honorary global professor of medicine and practicing physician and the clinical cardiologist. And I am recording these videos without any name, fame, or economics. They are free for all. It means that if you follow, you can listen properly, then you can obtain some knowledge and you can remember some knowledge while facing the examinations. The Chalmydia psittacosis. Introduction is that it is lethal intracellular bacterial species that may cause endemic avian Chalmydosis, repeat, zootic outbreaks in the mammals and respiratory psittacosis in humans. It is a zoonotic disease because avians they are involved, and as well as the other mammals and other they are involved. The most important reservoir of infection are birds. They are spreading through the birds. Those who are fond of petting these birds of any kind may acquire this infection. It is possible. If it is full-fledged infection, it may be lethal infection because it is underdiagnosed or misdiagnosed, or you have actually not considered it at all. In the postgraduate examination, they are expecting differential diagnoses. Whether they are these chances, but actually they want you have to enlist the differential diagnosis. Remember, this is a very important point which I am telling you, that they are expecting you the least diagnosis also, least likely diagnosis. Now these are the picture micrograph, and we've seen again the same sequence cycle, that is, they are in the cell, they are forming the elementary bodies, and binary fission the reticulate bodies. Elementary bodies, if they are attacking the target cells of nearby, they will cause the disease. Same acute inflammatory process will occur. And this is a part which is seen as the bronchial wall. These are the elementary bodies and then reticulate bodies. Reticulate bodies are the binary fission, the part of it, but they are not infective. Source of infection, I already said that, is transmitted by inhalation, the droplet infection, contact or ingestion among birds. First, the birds are important.
Specifically, I will speak about the parrots because I've seen one case in my life, and that is the person who acquired this disease or was fond of different type of the parrots in his home, and he developed acute apparative chest infection followed by the persistent wheezing, which is associated with a dry type of cough for many months, and the case was not diagnosed because the history was not taken properly. Now the case, because the wheezing is there in the age of 40-45, it is type 2 type of the bronchial asthma, which is not associated with the IgE antibodies. It is not associated with the IgE antibodies, and that is why there was difficulty in diagnosis. There is acute bronchitis, which can also cause the bronchial spasm and cause wheeze. That patient which I have dealt with, he was non-smoker, he was a very healthy person, and he was a landlord, and he is very fond of pets, specifically speaking the parrots of Australian parrots and different type of parrots of other countries, colorful parrots. So it started with just like this, like a flu-like symptom, and becomes a life-threatening pneumonia. The person was treated 2-3 months back. I remember the case of a pneumonia in a tertiary care hospital, and he was fine. And then the only remnant features in that patient was persistent wheezing and a dry cough, which was not gone. Many strains remain quiescent in birds until activated by the stress of the environment, stress of other things. Birds are excellent, highly mobile vectors for the distribution of Chalmydia infection, this type of infection, specifically the Psitacosis, because they feed on and have access to the detritus of the infected animals of all sorts. Because you know that there are different types of birds I don't want to mention. There are different types of birds which are hovering along in the Karachi also. The cows, the eagles, and the other species of the birds, small birds, sparrows, etc. And वो तो कबूतरबाज लोग हैं ना, जिनके बारे में मैं बता रहा था, कबूतर पालते हैं, जो कबूतर को हाथ में लेते हैं, चूमते हैं, उनके परों को साफ करते हैं, फिर वो मुकाबला करते हैं. अगर उनमें इस किस्म के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, देन आप जो है ना इसको सोचेंगे कि ये डिजीज़ भी हो सकती है पॉसिबल. मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आप जब हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा ना कि ये सिम्टम्स जो है नॉन स्पेसिफिक हैं. तो किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, वायरल में भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल में भी हो सकते हैं, फंगाई में भी हो सकते हैं, ये तो COPD में भी हो सकते हैं. इवन जो है वो हार्ट डिजीज़ के अंदर भी जो है वो कार्डियक अस्थमा होता है. तो अब इस सूरत में हाल में, इन दिस सिचुएशन, द हिस्ट्री इज़ द ओनली सोर्स वेयर यू कैन इमेजिन दैट समथिंग like Psitacosis type of infection may be the possibility. In our country, it is the diagnosis of exclusion actually, because of the lack of investigations. That is the problem, because you cannot do the all investigation because very costly. Life cycle pathogenesis are the same as the other the Chalmydia, that is the Chalmydias Psitacosis small bacterium that undergoes several transformations during its life cycle. Several transformations. So the vaccination against it will be difficult. It exists as a elementary body between hosts. The elementary is not biologically active but is resistant to the environmental stresses and can survive outside the house. So it is resistant and can remain there for hours unless it is picked up by another, what is called as the host
and they carry it to the other host. The elementary body travels from the infected bird to the lungs of the infected bird or oblique person in small droplets and responsible for infection. Once in the lung, the elementary body is taken up by the cells in the pouch called an endosome by phagocytosis, and they are safe there. Why? Because it is not destroyed by the fusion with the lysosome. As a typical of the phagocytosed material, instead it transforms into the reticulate body. Now, reticulate body, they are dividing binary fission, and endosome, which is formed here because of the elementary body which is engulfed inside by phagocytosis, form the endosome rather than destruction. Here the elementary bodies will actually transform into the reticulate body, and reticulate body is not effective, but it is a binary fission. Thousands and thousands of the elementary bodies are formed from the reticulate body. The reticulate bodies must use some of the host cellular machinery to complete their replication. DNA, for example, proteins or cytoplasmic proteins. The reticulate bodies then convert back to the elementary bodies and are released back into the lung, often causing the death of the host cell. Apoptosis is slightly delayed because of the entrance of the elementary bodies, and then after the acute inflammation, the cell will die. The reticulate body then converts back to the elementary body and released back into the lung, often causing the death of the host cell. The elementary bodies are thereafter able to infect new cells nearby, either in the same organism or in the new host. Thus, the life cycle of the Psitacosis is divided between the elementary body, which is able to infect new hosts but cannot replicate, but the other part, that is the reticulate bodies, which is the part of the Psitacosis, replicates but is not able to cause the infection. So, reticulate body will not cause infection or new infection. Otherwise, it should convert into the elementary bodies. And this is the cycle which is described here. See it. The reticulate body becomes elementary body and is released from the reinfect other cells. And then the Chalmydia entering the cells, fighting with the lysosome, endosome is formed, which the survival is there, and elementary body becomes the reticulate body again. And the acute inflammation at this site is possible, and then the bronchitis is called bronchitis. If it is the bronchioles, it is called bronchiolitis. If it is alveolitis, or it is interstitial of the lung plus alveolus, it is pneumonia. So replication occurs inside the host cell. Again the same thing, that it will infect the other cells by the reticulate body and then conversion again into the elementary body, and the cycle goes on and on and on and on. How will you diagnose? First of all, the history taking will be proper. Secondly, the physical examination should be done to this patient, because this patient has the Psitacosis, and the target organ are the lungs, where the bronchi can be affected, the trachea can be infected, the bronchioles can be infected, alveoli can be affected, the interstitium can be infected. And then in this fashion, the different type of, physical examination reveals the different type of findings. But it will be not globally involved. Lung is not globally involved. Only some part of the lung, segmental or at the lobar level, they are involving. In addition to the symptoms, and you have to and the history, already shared the clinical examination, which are the gold standard in our country, because we cannot do the comprehensive excision test specific for this
an immunofluorescence specific to this, and PCR or the other tests which I already mentioned, nucleic acid amplification test, probe test, etc. PCR specific can be used to confirm the diagnosis if it is available. If it is not available, and that is why you are dependent on the other tools of diagnosis. lungs. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेडियोलॉजी जो है ना पढ़ना सीखें, आप XHS को पढ़ना सीखें. हमने बहुत लोगों को कोशिश की है पढ़ाने की, इसमें बहुत टाइम लगाया है इसमें. आई हैव टेकन 18 hours, मोर देन दैट इवन. बहुत अच्छी तरीके से उनको बताया है, और उनसे फिर मैंने क्या किया है, उनसे फिर रिपोर्टिंग्स भी कराई हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो SMC के ज़्यादा हैं, इसमें डाउ के कम हैं. इस 15 साल में, इससे पहले 15 साल में जो है वो डाउ में ज़्यादातर बताया है. तो आई वॉज फेमस बिकॉज ऑफ द टीचिंग in Dow Medical College. That is the XHS and electrocardiogram, etc. And investigations. And at one time I was also teaching the anatomy to the juniors. ये लंबी कहानी है ये. Overall, according to the Vice Chancellor of the Dow University, who was the president of PMDC for 2 to 3 years, he said that your teaching time is highest in Pakistan because you have taken 3 hours, 2 hours, 4 hour sessions daily. I would say that since 1974 or 75, I am teaching different type of subjects. Because focusing as an internist I am now, there are many things which people do not want to study. One example is this. Different type of patterns are seen. All our patterns which you are seeing are probably, they are localized type of a problem, except this one. Because there is actually a pneumonia, it is a bronchopneumonia which is shown here. Otherwise, it is the lobar type of the pattern you see here. You will see it is associated with the pleural effusion. And the patchy type of a infiltrate are seen. Non-specific, because these type of patterns are seen in any type of the pulmotrophic type of a organism, which will cause the bronchitis or bronchiolitis or alveolitis or what I said, the pneumonia. These type of the pictures may be seen. Even these type of pictures are seen in pneumoconiosis also. The presentations are the cytic guy in the birth is often systemic. Infection can be inapparent, severe, acute, or chronic with intermittent shedding. The Psitacosis strain in the birth infect the mucosal epithelium cells and the macrophages of the respiratory tract. मेरा यहाँ क्वेश्चन यहाँ हमेशा एक किया करता हूँ, बर्ड्स का जो है ना कोई डॉक्टर तो होगा भाई. आपका पालतू अगर जानवर है तो आप अब ले जाएंगे वेटरनरी सर्जन के पास, लेकिन ये हवाओं में जो फिर रहे हैं, सीजल्स हैं और दूसरे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कराची में, वो बीमार भी हो जाते हैं, कभी कभी डेथ भी हो जाती है उनकी, लेकिन अक्सर ठीक हो जाते हैं. तो उनका भी तो कोई डॉक्टर होगा ना. आपसे क्वेश्चन ये है कि इनका डॉक्टर कौन है कि उन्होंने सीवियर इन्फेक्शन डेवलप किया और फिर भी ठीक हो गए. भाई आपके वेटरनरी सर्जन के पास जाएंगे तो ही विल गिव एंटीबायोटिक्स. The same acute inflammatory chain will occur. That is the transient bacteremia, then bacteremia, then septicemia, then pyemia, and then what is called as the chain which we have got, the septicemic shock, etc., etc. So in this case, the septicemia eventually develops and the bacteria become localized in the epithelial cells and macrophages of most organs, conjunctiva and GI tract, in birds, not in humans. It can also be passed in the eggs, so the generations, the newborns are infected in the birds are concerned. तो वो जो होता है कि उसने
तोते ने अंडे दिए हैं, फिर बड़ा खुशियाँ मनाते हैं। फिर दूसरा तोता उससे जो डेवलप हो जाता है तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार में लोग बेचते हैं, और इवन इससे भी ज़्यादा कीमत देते हैं। ऑस्ट्रेलियन है तो मैंने देखा 1 लाख का एक तोता ख़रीदा है लोगों ने, कि वो उसकी आवाज़ें निकालता है और ये करता है वो करता है। लेकिन वो तो ठीक है, अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जनरेशन में आ गया है तो फिर वो ये सफाया कर देता है। आपने देखा होगा कि चिकन जो हैं इनकी यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके अंदर 2 को बीमारी होती है तो 10,000 जो है बर्ड्स यानी चिकन्स की डेथ हो जाती है, कि वो एक ही जगह रह रहे होते हैं और वहाँ पे उन्हें खुलासी नहीं होती। तो वो क्या होता है कि फिर पूरा इन्फ्लेमेटरी चेंज जो है वो सारी की सारी डेवलप हो जाती है। स्ट्रेस विल कॉमनली ट्रिगर ऑनसेट ऑफ दिस सिम्टम। स्ट्रेस का मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस, शदीद गर्मी, रिजल्टिंग इन द रैपिड डिटेरियोरेशन एंड डेथ। अगर आपने उनको सही माहौल में नहीं रखा, खुले माहौल में नहीं ले गए, और जिस तरह से ये लोग पकड़ते हैं मुर्गियों को, जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, ह्यूमैनिटी तो होती ही नहीं है उनके पास। वो जो होते हैं परों से पकड़ रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, जिस तरह से भी करते हैं वो, ना उन्होंने कोई मास्क लगाया होता है ना कुछ। नहीं, ये नहीं पता कि इन्फेक्टेड अगर एनिमल है तो वो खुद भी जाएंगे काम से। उनका लिए तो कुछ शायद डॉक्टर मौजूद हो, जैसे मैंने ऊपर आपसे पूछा है कि इनका डॉक्टर कौन है। Chalmydia Psitacosis remains strains are similar in virulence and virulent forms होती हैं ज़्यादातर, virulent forms बहुत कम है। Grow readily in the cell culture, have 16S RNA genes that differ by less than 0.8% and belong to the 8 known serotypes. All should be considered to be readily transferred to the humans. वो बर्ड फ्लू और पता नहीं कौन कौन से फीवर जितने नाम आप लेते हैं वो सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है इसके। Chalmydia psittacosis serover A is endemic among citizen birds में होता है A, and has caused sporadic zoonotic disease in humans, other mammals and tortoises. And serover B is endemic among the pigeons. पिजन वाली बात जो की थी मैंने भी, जो कि कबूतरबाज लोग जो होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ हो जाती है। तो लिहाजा एक डिजीज़ तो वो थी जिसके मैंने जिक्र किया था, जो कि इंडोर पेशेंट था। ये पेशेंट जो इस किस्म के आए हैं बहुत सारे मेरे पास, जिनको पिजन्स पालने का शौक़ है, उनको ये मैं डायग्नोज कर चुका हूँ। तो उनकी तादाद मेरा ख्याल है तकरीबन अभी तक 45 ईयर्स में कुछ 40-50 होंगे। हैज़ बीन टर्की जो है ये भी जो है ना बर्ड है, और ये इस्तेमाल होता है, क्रिश्चियंस इसको इस्तेमाल करते हैं ख़ास मौक़ों पर, जैसे क्रिसमस वगैरह में। आइडेंटिफाइड एज द कॉज ऑफ द अबॉर्जन इन द हर्ड्स ऑफ द डेयरी कैटल। कैटल के अंदर ये होता है, अगर ये चला जाए तो अबॉर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सीरो C एंड D आर द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ऑफ द स्लॉटर हाउस। ये वर्कर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्लॉटर हाउसेज वर्कर्स एंड फॉर पीपल इन द कॉन्टैक्ट विद द बर्ड्स। जो हमारे यहाँ होता है वो C एंड D का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन कबूतरबाजों के लिए कौन सा होता है, भी ज़्यादा होता है। और फिर मैमल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं डायरेक्टली, हर्ड चीज कहलाते हैं, उनके अंदर जिसमें टॉर्टोइजेस भी शामिल हैं, उनमें A है। हमारे पास जो खास ताल्लुक है C एंड D का है। और इनके लिए जो है आउटब्रेक्स होती हैं, ये कुछ कंट्रीज में पकड़ लेते हैं इसको, इन्फेक्शन को, और इसको आइसोलेट करते हैं। सीरोवर E का स्पेसिफिक रिजर्वायर सीरोवर E भी होता है। तो ये D तक तो हो गया, हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड येट। अब ये रिजर्वायर इसका E का मालूम है कि इसका रिजर्वायर कौन सा है, लेकिन ये पता है कि ये डिजीज़ कॉज करता है, तो A B C D E, लेकिन इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं पता। M56 एंड WC सीरोवर्स पर आइसोलेटेड ड्यूरिंग आउटब्रेक इन मैमल्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इसके सीरोवर्स बहुत डेंजरस हैं, और सफाया कर देंगे पूरी की पूरी जो है ना वो बर्ड्स कॉलोनी का। मैनी Chalmydia psittacosis का strains are susceptible to the bacteriophage yeast, which is the bacteria that causes the disease. Chalmydia psittacosis is a susceptible to the bacteriophage yeast.
ससेप्टेबल तो बैक्टीरियोफेज क्या चीज़ होती है? बैक्टीरियोफेजिस का भी क्वेश्चन है मेरा। एक क्वेश्चन ये बनाया मैंने, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? और आप जाएंगे अपने मोबाइल खोलेंगे, बैक्टीरियोफेज निकालेंगे, बता देंगे। ऐसे अगर बताना होता तो फिर क्या बात है? और फिर वो आप कितने दिन तक ध्यान में रहेगा, ये मुझे बताइए। तो आपको ये पढ़ाया जा चुका है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या चीज़ होती है, ये आप अगर शेयर कर दें, जो हमने मेपमी के नाम से बनाया हुआ है, किसी ने कोई जवाब देता कोई नहीं है इसका। लेकिन हाँ, चलो कोई बात नहीं। मेरे साथ मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन वो ये जवाब ज़रूर देंगे इसका। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट वही है जो पहले था। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस अब जो है आजकल वो मैक्रोलाइट्स हैं, एजिथ्रोमाइसिन है, और साथ में जो है वो दूसरी ड्रग जो इस्तेमाल है टेरिथ्रोमाइसिन है। तो सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन जो है मैक्रोलाइट्स आर इफेक्टिव। प्राइमरी जो है इसकी जो है एक ज़माने में एरिथ्रोमाइसिन देते थे हाई डोजेस में। और अगर वो फर्ज करें टेट्रासाइक्लिन से सेंसिटिव आपको लगता है तो फिर टेट्रासाइक्लिन आर यूज्ड। वी यूज डॉक्सीसाइक्लिन यूजुअली टू ट्रीट दिस कंडीशन। बर्ड्स के अंदर ये क्या करते हैं, कैप्सूल को तोड़ देते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को बर्ड्स को फिर खिलाते हैं, और फिर इसको 4 आवरली जो है ना वो सोल्यूशन बना बना के हलक में इंजेक्ट करते रहते हैं। द ड्रग्स आर गिवन इंटरवेनसली और ओरली डिपेंडिंग ऑन द। अगर निमोनिया है और इसका स्कोर ज़्यादा है, कर्ब स्कोर ज़्यादा है या पोर्ट स्कोर ज़्यादा है, तो आपको फिर इंटरवेनस लगानी चाहिए मैक्रोलाइट्स। इम्यूनोथेरेपी कामयाब हो जाती है, पर प्रॉब्लम ये है कि टेट्रासाइक्लिन भी अच्छी ड्रग है और ये इंजेक्टेबल भी मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम इनका ये है कि चिल्ड्रन को जो होता है इसमें डिपोजिशन हो जाता है बोन के अंदर, उनको ग्रोथ मुतासर करती है। उसके बाद टीथ या एनामल्स के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए इनको यूज़ नहीं करते। प्रेग्नेंट वुमेन में इसलिए नहीं करते कि ये जो है टेराटोजेनिक है, तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स को अवॉइड करते हैं इन कंडीशन में। एंड देन आइबुप्रोफेन और एस्टामिनोफेन एंड फ्लूइड्स आर आल्सो एडमिनिस्टर्ड। ब्रोंकोडायलेटर्स शुड बी गिवन, जैसे पहले बताया गया था, उसके बारे में मैं बड़ी लंबी तकरीर कर चुका हूँ। ब्रोंकोडायलेटर्स, कैनबिस और टोबैको स्मोक शुड बी अवॉइडेड। दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। अब ई सिगरेट अगर कोई पी रहा है वो भी खतरनाक है, हुक्का पी रहा है वो भी खतरनाक है, और स्मोकिंग कर रहा है वो तो है ही खतरनाक। कैनबिस का ये होता है 2-4 कशी लगाते हैं कि उनको दुनिया जो तब्दील हो जाती है उनके लिए, चर्च जिसे कहते हैं, तो उनके लिए भी डेंजरस है। ये डिजीज डिले हो जाएगी, यानी ये एलिमेंट्री बॉडीज जो हैं वो तो थोड़ी सी डोमिनेंट हो जाती हैं कुछ दिन के लिए, उसके बाद अचानक जो है ना रेटिकुलेट बॉडीज़ कन्वर्ट होके एलिमेंट्री बॉडीज़ में आ जाएंगी और बड़ी बड़ी तादाद में आएंगी, और उसके बाद जो है ना लंग इन्फेक्टेड होगा एज निमोनिया, और निमोनिया अगर किसी को हो गया और आपसे नहीं मैनेज होगा तो डेथ हो जाएगी। व्हेन टेकिंग टेट्रासाइक्लिन डेयरी प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड। टेट्रासाइक्लिन जब ओरली देते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स इसको इनहिबिट करती है अंदर एब्जॉर्प्शन में, इसलिए टेट्रासाइक्लिन जब देते हैं ना कहते हैं दूध के साथ दो दवाइयाँ, तो नहीं देते हैं इसको। कोई भी ना दवा दें, दूध के साथ देने की क्या ज़रूरत है? गर्म है दवा, और गरम गरम कोई दवा नहीं होती। गरम जो है आपका अपना दिमाग है भाई, समझदारी से काम लें, उसको समझाएं कि इसको आपको पानी से खाना है, और अगर इन बिटवीन फूड लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे। मिल्क लेना है या दूसरी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें इस्तेमाल नहीं करें जब तक टेट्रासाइक्लिन अगर कोई ले रहा है तो मैनेजमेंट इस तरह कहते हैं। इसकी वैक्सीन बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम था, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इसके अंदर इसकी जो साइकिल है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती है। तो ऐसी सूरत में वैक्सीन नहीं बना सकते, मलेरिया की वैक्सीन नहीं बना सकते आप। इवन जो है ना वो, मैं तो फिर सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ हेपेटाइटिस सी कि उसकी वैक्सीन बनानी चाहिए थी। उन्होंने अब तक 20-25 साल में ट्रायल दिए हैं इसके, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त म्यूटेशन होता है उसका कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करती बॉडी, और फिर ज़ाहिर पेशेंट जो है उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो दीज आर दी डिस्कशन अबाउट द सीटाकोसिस आर कंसर्न तीनों आपको सीटा का इन्फेक्शन बता दिए हैं, टेकोमेटस,
आपको बताया जो कॉमनेस्ट है, उसके बाद जो है ना वो निमोनिया है, उसका इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, और तीसरी जो है वो सीटाकोसिस है, जिसको आप वो आना चाहिए एज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस. It is the differential diagnosis of pneumonia. It is the differential diagnosis of refractory asthma. Wa alayna al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.